हेलो फ्रेंड्स। सो इसके आगे वाले वीडियो में हम लोगों ने मॉडल्स के ऊपर कोड किया था और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग एडमिन में जाकर जितने भी हमने जो मॉडल्स में जो कोड बनाए थे उसके जो डेटाबेस में जो टेबल क्रिएट हुए हैं कैसे उसको एडमिन में डिस्प्ले करेंगे। मेरा सर्वर ऑन है, एक बार हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा था। तो ये हमारा आउटपुट था जिसको हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे क्रिएट सुपर यूजर बनाए थे हम लोगों ने। और सुपर यूजर बनाने के बाद कैसे हम लोगों ने लॉगिन किया और ऑथर बुक्स पब्लिशर ये जो तीन हमने मॉडल्स के कोड लिखे थे कैसे हमारा यहाँ पर रजिस्टर हुआ। तो दिस ऑल थिंग वी हैव सीन। आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट मैपिंग का कोड करते हैं। ऑब्जेक्ट मैपिंग क्या है एक बार उसको समझ लेते हैं कि Django ORM दैट इज द ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग इज ए कोर कंपोनेंट। ये कोर कंपोनेंट Django फ्रेमवर्क के अंदर पे एक कोर कंपोनेंट के हिसाब से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। Django वेब फ्रेमवर्क दैट हैज बीन मेकिंग इंटरेक्शन, जो हम लोगों को एक इंटरेक्शन देता है डायरेक्टली हमारे डेटाबेस में डेटा को पुश करने के लिए हम लोग ORM का यूज कर सकते हैं मीन्स इंस्टेड ऑफ रॉ एसक्यूएल क्वेरी। सो इसको जब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तब हम लोगों को ज़्यादा ये चीज़ क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग अपने कोडिंग सेक्शन में चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि कैसे इसका कोडिंग होता है। तो आइए एक बार हम लोग चलते हैं अपने VS कोड में और VS कोड को चलते हैं जो हमारा सर्वर चल रहा है उस सर्वर को हम लोग यहाँ पर बंद करते हैं Ctrl+C। मैंने सर्वर को बंद किया। अब हम लोग का जो नेक्स्ट वर्क है वो ये है कि हमको यहाँ पर अपना Django सेल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैं एक बार क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। So my this virtual environment is activated. So what I need here, Django, sorry. So let me write here Python manage.py cell. सो आपको लिखना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई सेल और जैसे ही आप इसको लिखोगे तो आपका जो सेल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, हमको यहाँ पर हमारे जो हमने जो मॉडल्स बनाया है उस मॉडल का जो डेटाबेस है उस डेटाबेस को हम लोग क्या करेंगे, उसमें डेटा को पुश करेंगे। तो आइए कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। तो फ्रॉम हमारे ऐप का नाम क्या है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी डॉट मॉडल्स। तो ये जो लाइब्रेरी के अंदर पे जो हम लोग का ये जो लाइब्रेरी जो हमने बनाया है मॉडल्स डॉट पाई, ये एक्चुअली किस एप्लीकेशन के अंदर पे है, ऐप के अंदर पे है। तो हम यहाँ पर करेंगे फ्रॉम लाइब्रेरी डॉट मॉडल्स। कोड को समझिएगा ठीक इसी तरह से अगर नेक्स्ट टाइम आप कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का नाम लिखिएगा डॉट मॉडल्स डॉट पाई और उस मॉडल्स के अंदर पे आपने क्या क्या क्लास बनाया है उस क्लास को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। फ्रॉम मॉडल्स डॉट पाई इंपोर्ट author, then book, then publisher। ये तीन लिखेंगे। अगर यहाँ पर अगर आपका एरर आता है तो आप देख लीजिएगा कहीं आपका स्पेलिंग मिस्टेक होगा, इसको लेके ही एरर आएगा, अदरवाइज एरर आने का कोई संभावना नहीं है। फिर नेक्स्ट लाइन जो हम लोग लिखेंगे वो ये है कि हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं। पहले जो हम लोग एंट्री करते हैं वो अपने ऑथर के लिए करते हैं। तो आइए हम लोग ऑथर वन बनाते हैं, एक वेरिएबल ऑथर वन इक्वल टू AUTH और ऑथर। एंड देन ऑथर के अंदर पे हम लोगों ने क्या क्या एट्रीब्यूट्स लिया है, फर्स्ट नेम। तो आइए फर्स्ट नेम ले लेते हैं इसका। तो जैसा जो आपने यहाँ पर वेरिएबल जो आपने कॉलम, जैसे एक्चुअली क्या होता है ये डेटाबेस के अंदर पे ऑथर बोल के एक टेबल बनेगा, उसके अंदर जो कॉलम होगा उस फर्स्ट कॉलम का नाम होगा हमारा फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम इक्वल टू आप यहाँ पर डाल दो, फर्स्ट नेम इक्वल टू लेट्स से आई एम गोइंग टू अनुराग, okay, and then give the last name equal to Singh, and then uh, third variable was date of birth, so BIRT birth date इक्वल टू आप डाल दो ईयर पे, वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले लो 1992 and then give some कमेंट लाइक हाइफन भी दे सकते हो आप अगर यूज करो तो हाइफन 0405, राइट। तो ये हो गया हमारा इसका। और इसको क्या करेंगे हम ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे एंड देन आई एम गोइंग टू हिट द इंटरव्यू। अब ये जो हो गया आपने ऑथर बनाया, तो ये ऑथर जैसे ही हो गया है इसको अब हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो कैसे इसको सेव करते हैं, ऑथर डॉट सेव फाइल। तो ये जो मैंने लिखा ऑथर वन, सॉरी ये ऑथर वन होगा यहाँ पर, ऑथर वन बिकॉज ऑथर वन डॉट सेव है।
तो ये क्या हो जाएगा, ये डेटाबेस के अंदर पे ये जो तीन मैंने जो वैल्यू इंसर्ट किया है कॉलम टेबल को लेकर, टेबल पे जो ऑथर टेबल है उसके जो कॉलम है फर्स्ट नेम लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ, उसमें जो वैल्यू मैंने डाला है वो सेव हो जाएगा जैसे ही मैं ऑथर वन डॉट सेव डालूंगा। तो ये जो हुआ इसको हम लोग बोलते हैं OMR। ये हम लोग को डिजेंगो एक देता है, इसके माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर पे डेटा सेव कर सकते हैं। तो एक बार हम इसको पहले क्या करते हैं, सेव करते हैं, इंटर की मैंने मारा, और एक बार हम क्या करते हैं, अपने सर्वर को बंद करते हैं, सॉरी इस सेल को बंद करते हैं, एग्जिट करता हूँ मैं, CLS करता हूँ, पाइथन django पाइथन मैंने .py रन सर्वर। अब मैं आप लोगों को एक बार सर्वर पे ले जाके चलता हूँ और एक बार दिखाता हूँ कैसे ये वर्क करता है। हमारा जो एडमिन था, एक बार उस एडमिन में जाके चेक करते हैं कि क्या मेरा जो ऑथर है वो रजिस्टर हुआ है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर तीन हमारा दिखा रहा है, ऑथर्स बुक्स एंड पब्लिशर्स। सो लेट्स सी ऑथर। तो अभी देखिए हमारे यहाँ पर अनुराग सिंह आ चुका है, ठीक है ना। ये अनुराग सिंह को अगर क्लिक करेंगे तो देखिए अनुराग सिंह 1992 0405, राइट। तो लाइक दिस वे हम लोग क्या करते हैं, हमारे डेटा को पुश करते हैं। चलिए अभी हम लोग फिर से एक और वैल्यू लेते हैं और वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। तो लेट्स कम टू द कोडिंग पार्ट अगेन। सर्वर को मैं फिर से क्लोज करता हूँ, Ctrl+C CLS और पाइथन मैनेज डॉट पी वाई सेल, राइट। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि क्या है, अभी मुझे ऊपर के कोड की जरूरत नहीं है। तो आप लोग ये इस कोड को समझिए, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं। तो आइए एक दूसरा मैं बनाता हूँ, दूसरा ऑथर के लिए बनाता हूँ। तो ऑथर टू इक्वल टू, नहीं पहले मैं क्या करूँगा, पहले फ्रॉम लाइब्रेरी डॉट मॉडल्स import authors, okay, and then books, then publisher. फाइन, सो आई गॉट एरर, ओके फाइन। जैसा कि मैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया हूँ, कोई इशू नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया था। तो एक बार फिर से मैं इसको टिक कर लेता हूँ। ये मेरा हो गया ऑथर, सॉरी ऑथर कॉमा बुक कॉमा, सॉरी बुक इज बिग कैपिटल एंड देन पब्लिशर, फाइन। तो अब सही है। एंड देन आई एम गोइंग टू राइट फॉर द अनदर ऑथर, AUTHOR ऑथर टू इक्वल टू that is author, and then write here first name Animesh and second name last name Oja, and then date of birth आप लिख दो equal to date of birth, sorry that is my birth date, birth underscore date equal to, and then you can write here 1991 hyphen 04 hyphen 05, right. So I have completed my this part. Now I am going to save author to dot save. Okay, so now you can see author 2 I also saved. Now what I am going to do, I am going for the publisher instance। मैं publisher के लिए बनाता हूँ, तो publisher 1 लिखता हूँ यहाँ पर, publisher 1 इक्वल टू उसके लिए जो हम लोगों का publisher, एंड देन फर्स्ट उसका क्या है, नेम है, नेम इक्वल टू टाटा, एंड देन टाटा बुक पब्लिशर। नेक्स्ट जो है हमारा एड्रेस इक्वल टू न्यू मुंबई बांद्रा, ओके। एंड देन थर्ड जो है मेरा वो ले लेते हैं सिटी, सिटी इक्वल टू बांद्रा, और स्टेट ले लेता हूँ मैं महाराष्ट्र, एंड देन कंट्री ले लेता हूँ मैं स्टेट, सॉरी। सो ये जो था स्टेट प्रोविनेंस था, तो STAT स्टेट अंडरस्कोर प्रोविनेंस,
तो 1 मिनट के लिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि आप उसी वेरिएबल पे वैल्यू इंसर्ट करोगे जैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, स्टेट प्रोविंस PROVINC, ये सो स्पेलिंग शुड बी करेक्ट, राइट? सो इफ देयर इज स्पेलिंग मिस्टेक देन योर कोड विल बी completely रॉन्ग। सो ऐसा कुछ गलती नहीं करेंगे हम लोग। Residence, महाराष्ट्र, एंड कंट्री इंडिया, देन वेबसाइट इक्वल टू http colon slash slash data.com. So I just giving this all details, and then I need of a publisher, one dot save to be saved, right? Now I have created for the publisher instances also, right? मैंने publisher के लिए भी बना दिया। अब चाहो तो publisher 2 के लिए भी बना सकते हो, तो आइए publisher 2 के लिए भी बना लेते हैं हम लोग। आप लोग भी अपने साइड से प्रैक्टिस करिएगा। publisher 2 equal to, so publisher name equal to rocks. So, and then address is equal to 456 New York, and then city. So address completed, city. So city is here. So city equal to New York, and then state equal to, make it as a like New York, give New York, right, this way, and then country equal to USA, and last is website equal to http, and then colon, then double slash knowledge rocks.com. Okay, and then close. Okay, and then publisher 2 dot save. Okay, so I have saved publisher 2 also. Now what we are going to do, I am going to, so I have created the author, I have created the publisher also. Now I am going to make a entry for book also. So let's make a one entry for the book. So book 1 equal to book, and then what are the things we have mentioned in the book. So let's check it out. Title of the book, so learning C program, the title equal to learning C, and author equal to animation. So I can also give the author like author. So what author I have given here? Animesh. Yeah, okay. So author Animesh. So I can also give here author 1 or author 2. So I am just giving here author equal to AUTH or author 2, right? So I am giving author 2 as an object because I have created here the author object. So author 2, and then, and don't give to the double, that is author 2, डबल स्ट्रिंग में नहीं, क्योंकि मैं वैल्यू दे रहा हूँ ऑथर टू। एंड देन पब्लिकेशन डेट क्या है किताब का, उसको देख लेते हैं। तो वो हो गया हमारा 2018 हाइफन 01 हाइफन 01, राइट? So 1st January 2018 I given the this,
and then ISBN number equal to, I'm giving for that, that is the 1 2 3 4 5 6 7 8. So I given this 8-digit number randomly, and uh, publisher, that will be okay. So how I will select the publisher? So what I am going to do, that is a book one dot publisher dot add. So this all things I have written. Okay, so what I am going to do, that is for up to here I am just going to do, and then I am writing here book one dot save. Okay, so book one I saved here, and I also wanted to add the publisher book one dot publisher dot add publisher one comma publisher two. Okay, so like this way I will do these things. So I completed this part. Now let me close this part and run the server. Python manage.py run server. So let me go back to the admin. Now this is a book. In the book you will say learning C, and you are seeing that I got here two both publisher name here, that is a Tata book publisher rocks, and ISBN number is here 1 2 3 4 5 6 2018. This all things I have got, right? And in the author place I got a two persons name entry, that is Anurag Singh and Nimesh Ojha, and publisher I got a two publisher entry here, rocks and Tata book publisher. So like this way you will do the part of your ORM, right?